अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ये जो है हमारे पास डेज़ निसान डेज़ गाड़ी आई है। इसका जो है कॉइल लीक है, कॉइल रिप्लेस करना है। और हम आपको दिखाएंगे कि कॉइल की क्या कंडीशन है, और ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा कॉइल डालना चाहिए। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपको दिखाते हैं ये डैशबोर्ड जो है कैसे आराम से और तरीके से खोला जाएगा। ब्रेक दबाना, दबा के रखना, छोड़ना नहीं है। भाई ये पैनल जो है ना, ये एहतियात से निकाला जाए, क्योंकि इसमें जो है ये पूरा सेंसर है, टच काम करता है। वो आगे लेकर आया हूँ। कॉइल जो है लीक निकला है, ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं पूरा अंदर से ये गल गया है, ये देख रहे हैं। और जो है अब हम जो कॉइल डाल रहे हैं ये है इसका जेन्युइन कॉइल है, बिल्कुल नए जैसा जेन्युइन कॉइल है ये। अच्छा, और ये आपको मिलेगा, चाइना का कभी नहीं डालिएगा, क्योंकि चाइना का जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कभी भी इन गाड़ियों में कॉइल डालें तो आप जेन्युइन डालें, आपको परफॉर्मेंस अच्छी जो है यही देगा।
साबिर भाई कैसी है? मस्त।